everyone, welcome back to the series Motion, Class 9 Physics. So this is lecture number 5 in which we are going to continue the graphical representation. Previously we discussed about a distance time graph. Now we will talk about a velocity time graph with the same circumstances, that is stationary, uniform and in non-uniform. Now, in non-uniform motion, we are extending it to a uniform acceleration and non-uniform acceleration. We will discuss each of the case in detail. Okay. So, what do we mean by a velocity time graph? So, as like a distance time graph, velocity time graph tells us the velocity of body changes with time. So basically it tells the dependence of velocity on time. So this is the main function of graph as we learned in the previous lecture. So velocity time graphs show how velocity of a body changes with passage of time. Now, as I have already told you कि time axis हम हमेशा x-axis पे लेंगे, like in any graph, तो obviously जो velocity होगी वो कहाँ पे plot की जाएगी? y-axis पे. Like there's nothing to discuss about. Okay. Now let's take the first case, which is the velocity time graph for a stationary object. Now, if an object is stationary, that means it is at rest, which means position is not changing. Position is not changing. It is at rest. तो जब कोई body rest पर है, वो move ही नहीं कर रही है, तो उसकी speed या उसकी velocity दोनों ही क्या होंगे? Zero होंगे. तो अब आप खुद ही बता दो कि इसका ग्राफ क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल ये y एक्सेस है एंड ये x एक्सेस है, यहाँ t है, यहाँ वेलोसिटी है. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जल्दी से बता दो मैं कैसे बनाऊंगी. अब क्योंकि वेलोसिटी 0 है तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा. मतलब कि टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, टाइम इज इंक्रीजिंग बट वेलोसिटी इज व्हाट? 0 ऑल द टाइम. सो टाइम कितना ही आगे तक चले जाए, वेलोसिटी 0 एट ऑल टाइम. ओके. So now let's study about second case, that is with a constant velocity or a uniform motion or with a uniform velocity. Now, when I say uniform velocity or constant velocity, मतलब कि velocity क्या है? Same रहेगी. In entire motion of that object, velocity will be same. So basically क्या ग्राफ बनेगा? ऐसा कि y axis पे तो अपन ने velocity को प्लॉट किया हुआ है, एक्स एक्सिस में अपन ने टाइम को प्लॉट किया हुआ है, तो टाइम तो धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो वेलोसिटी है ना वो सेम ही रहेगी हर टाइम पे. क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ हम बना रहे हैं. सो 1 सेकंड पे ऑब्जर्व करो तो भी वेलोसिटी 5 है, 2 सेकंड पे ऑब्जर्व करो तो भी 5, 3 पे भी 5, 4 पे भी 5 एंड 5 ही 5. So basically the velocity time graph for a body moving with constant velocity or with the same velocity will be a horizontal line parallel to the time axis. Now we get the same exact graph for a distance time graph. Can anyone tell me when? Do comment down in the section below. I will surely check it. Okay. Now let's read the interpretation. Interpretation is nothing but जब आपको ये हेडिंग वेडिंग कुछ नहीं दी जाएगी, आपको बस ये सिंपली ग्राफ दिया जाएगा. सो कैन यू फाइंड आउट लाइक ये किस मोशन का ग्राफ है या ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा? ऑब्वियसली ग्राफ आर द बेस्ट वे इन विच यू कैन जज द ऑब्जेक्ट मोशन. So from the graph, it is clear that with the passage of time, there is no change in the velocity. The body is moving with the constant velocity. Okay, so we are able to find it. Now let's talk about, okay, like before covering the second case, let's first find out how we are going to calculate distance or displacement using velocity time graph. Now, if you want to calculate distance or magnitude of displacement, like in such a case जहाँ पे velocity is same or it is constant throughout the motion, तो shortest distance or distance will be equal. So the magnitude of distance or the magnitude of displacement will be equal to the distance only. So इसलिए the दोनों option लिखे गए हैं. So to calculate distance or the magnitude of displacement, we have to follow some steps which are super easy. Now first you tell me what is the formula of velocity. Velocity is nothing but displacement upon time.
So when I want to know the displacement, what will be the formula of displacement? Displacement will be equal to velocity into time. तो बस अब क्या करना है, velocity निकालो, time निकालो, multiply कर दो, displacement या distance हमें मिल जाएगा. तो अब टाइम क्या होगा, अब ये ना अपन को एक केस दिया हुआ है एक कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, ठीक है, from point A to point B. Now what I have done is, like, see, this AD length is giving what? Velocity, right? The y-axis or the distance from the x-axis gives the velocity, and this, the point here on x-axis are giving the time. So basically this AD length is nothing but velocity, and T2 minus T1 is nothing but time interval. So what will be the distance or the magnitude of displacement? Velocity, which is AD, and multiply with the time, and time is nothing but T2 minus T1. So basically what I found, देखो T1 minus T2 को एक लेंथ मान लो, ठीक है, इसको एक लेंथ मान लो. So basically रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है कि एक रेक्टेंगल है, AD and DC are the sides of the rectangle. We are multiplying the length and breadth of the rectangle to get the distance or the displacement. So finally we can conclude that the area of rectangle between velocity time graph gives us the distance or the magnitude of displacement. So I'm just highlighting which is really super important, that is the magnitude of displacement is equals to the area under velocity time graph. Now ऑब्जेक्ट का मोशन तीन तरीके का हो सकता है, या तो फिर वो हिल ही नहीं रहा है, रेस्ट पर है. जब वो हिल रहा है तो वो एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ या इक्वल सेम स्पीड के साथ चलेगा. और तीसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जहाँ पे जो स्पीड होती है या जो वेलोसिटी होती है वो होती है वेरिएबल. ओके, यूनिफॉर्म में क्या होता है, वेलोसिटी सेम होती है. So these are the main three type of motion an object can have. Now in non-uniform motion, which is also known as the accelerated motion, has two more option, two more category. What are they? When acceleration is constant and when acceleration is not constant. So non-uniform acceleration and uniform acceleration are the terms for it. We have already discussed कि हम uniform acceleration और non-uniform acceleration से क्या मतलब समझते हैं. So yeah, this is a kind of flow chart for you through which you can understand कि एक object का motion या तो फिर वो रुका हुआ है, चल रहा है तो same speed से चल रहा है, या फिर अलग अलग speed कम कर रहा है बढ़ा रहा है. अगर वो कम कर रहा है बढ़ा रहा है तो acceleration है उसके पास. डिपेंड करता है उसके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. ओके, सो दैट वाज अ फ्लो चार्ट सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड. नाउ starting with the second type or the third type, to be very clear with, if I consider rest as first case, and I consider second case to be with a uniform speed. Now the third case is the uniform accelerated motion. यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन मतलब कि अपन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तो घुस चुके हैं. अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की पहली कैटेगरी है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब कि ऐसा मोशन जहां पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. ठीक है, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता था, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो जब इक्वल चेंज आ रहा है टाइम के साथ साथ, तो इसकी भी क्या लाइन बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी. जैसे कि एक यूनिफॉर्म स्पीड में चलने वाले की डिस्टेंस, एक यूनिफॉर्म मोशन में चलने वाले की डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनती है. क्यों? क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है. सिमिलरली यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में चलने वाले ऑब्जेक्ट की velocity time graph is a straight line. Why? Because the change in velocity is equal in equal interval of time. So here is an example of it, like you can read it, but I'm directly telling you the conclusion that in a that in a uniform accelerated motion we get a straight line of a velocity time graph.
So this is the interpretation. The nature of a graph shows that velocity changes by equal amount in equal interval of time. In each interval of like 10 seconds, the change in velocity is 18 meter per second, which remains the same. That means the acceleration of body is constant. So by looking just at the graph, I can interpret that the motion is under uniform accelerated motion. Now, अब इस ग्राफ में मैं डिस्टेंस या मैग्नीट्यूड को कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ, हमें वो निकालना है. सो बेसिकली एक ही बात है, like the area of velocity time graph always and always give the magnitude of displacement. मतलब ये तो फैक्ट है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. फैक्ट क्या है, हमने इसका लॉजिक भी समझा कि अपन ने वेलोसिटी इनटू टाइम किया तो वेलोसिटी लेंथ बनी, ब्रेथ बनी एंड टाइम अपना लेंथ बना. अब इस वाले नेचर में जहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बन रहा है, ऐसा स्ट्रेट लाइन. तो अब इसका ग्राफ क्या होगा, ये होगा, जो कि क्या बन रहा है, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बन रहा है. और राइट एंगल्ड ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो अब यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्यों यूज किया है, देखो ये सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि एरिया ऑफ वीटी ग्राफ ऑलवेज गिव मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अब यहाँ पे रेक्टेंगल क्यों इन्वॉल्व हुआ, इसका मैं एक जल्दी से छोटू सा एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा. ओके, so here's a graph of VT, okay, and this graph is not starting with the origin but starting from somewhere here, but we have a straight line. So if we have a straight line for a VT graph, that means the object has a uniform acceleration. Now just shade the area which is covering, which is involved in the graph. तो इस लाइन के अंदर कितना एरिया इन्वॉल्व है, ये पूरा एरिया इन्वॉल्व है. अब इसे आप दो पार्ट में डिवाइड करो तो आपको क्लियरली दिखेगा कि एक तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ये वाला, और एक रेक्टेंगल बन रहा है ये वाला. सो बेसिकली दिस एरिया when an object is having a uniform acceleration is area of rectangle plus area of triangle. Okay, so I don't suggest you people to learn these formula. This is more of a simple basic math. You just learn कि VT ग्राफ के एरिया को अगर हम निकालेंगे तो वो हमें डिस्प्लेसमेंट देगा, हमें वो डिस्टेंस देगा, ठीक है. Now let's talk about the non-uniform motion part 2. Non-uniform motion with non-uniform acceleration. Okay, so it will be somewhat like this, like abruptly. It won't be a particularly straight line in increasing or decreasing. Okay, now this graph is of a uniform accelerated motion. Why? Because it is a straight line. It is proper straight line but with a declining slope. इसकी जो slope है वो declining है, तो ये accelerate ना करके deaccelerate कर रहा होगा, ठीक है, deaccelerate कर रहा होगा. But like see this graph, so this is abrupt. Velocity कभी increase हो रही है, कभी decrease हो रही है, कभी increase हो रही है, कभी decrease हो रही है. So एक uniform uniformity के साथ velocity में change नहीं आ रहा है. So obviously this is a graph of a non-uniform acceleration. So we have covered all the graphs of velocity time graph. We have covered for a stationary body, which is on the x-axis itself क्योंकि velocity 0 होता है. We have covered for a uniform motion जहाँ पे uniform velocity या constant velocity होता है. So it is a horizontal line parallel to the time axis. Then we have covered two cases of a non-uniform motion. One is a uniform acceleration in which we have a straight line between VT graph. It can be increasing, it can be decreasing depending upon acceleration. Accelerate कर रहा है या deaccelerate कर रहा है, and we can easily calculate the distance or the magnitude of displacement by finding the area under VT graph. And finally, we learned the graph of a non-uniform accelerated motion, which is like a zigzag, which is not normal, abrupt graph. Okay. Now let's do an easy question on it.
and then I will give you a super easy question to practice, but that is very important question for your concept building. So I hope you will be doing it by your own. Now this question is, let's read this question. Okay, the example 3 says that we have to find the acceleration of the lift, like 3 cases: during the first 2 seconds, between second and the 10th second, during the last 2 seconds. Now let's take the case number 1. Acha. Before doing this question, I hope you all remember this formula, that acceleration is change in velocity upon time. Now let's take case number 1. So what it says, during the first 2 seconds. तो पहले 2 सेकंड्स में हमें मोशन को जज करना है और उसका एक्सेलरेशन बताना है. तो बेसिकली मुझे इतना सा ग्राफ देखना है, ठीक है. अब इतने से ग्राफ का मेरे को वेलोसिटी चेंज निकालना है, मतलब कि v फाइनल माइनस v इनिशियल, एंड टाइम इंटरवल लिखना है. सो टाइम इंटरवल इज व्हाट, 2 minus 0, and final velocity is 4, initial is 0, so it will be like 4 upon 2, which is 2 meter per second square. Do remember the units in physics and math. So yeah, that is the case number 1. Now let's take case number 2. It is saying between 2 and 10 second. So this is 2, like, let me change the pen for you. So this is 2 and this is 10. So basically I have to judge this line for second case. तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, लाइक फॉर्मूला वापस से वही होगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल. कितना टाइम इंटरवल या कितने सेकंड्स के लिए आपने देखा. तो v फाइनल इज 6, v इनिशियल इज 4 एंड टाइम इंटरवल इज 10 minus 2. तो मतलब बेसिकली 8 सेकंड तक आप लोगों ने जज किया. सो इट इज 2 minus 8, दैट इज 1/4 meter per second square. Do focus on the unit. Now let's take the final and the third example, that is during the last 2 seconds, that is 10 to 12. These are the last 2 seconds. Okay, तो मेरे को ये डिक्रीजिंग वाला ग्राफ मेरे को जज करना है. तो अब इसका भी बता दो, फाइनल वेलोसिटी क्या है 0 एंड इनिशियल वेलोसिटी क्या है 6, टाइम पीरियड क्या है 2, दैट इज 12 minus 10. तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब ये नेगेटिव साइन आया है, वेलोसिटी अपनी अपन ने पॉजिटिव ले रखी थी, लाइक वेलोसिटी इज इन पॉजिटिव वाई एक्सिस. So velocity is positive, acceleration is negative, both has opposite signs, so obviously this is retardation. Okay, बाकी के जो दो हैं they are positive, so they both are accelerating, क्योंकि velocity अपन ने इस केस में पॉजिटिव लिया हुआ है, y axis में प्लॉट किया हुआ है. So that's all for example number 3. Now this is the solution. Pause the video and I hope you get a better understanding of it. Now there's a question to practice which will help you in concept building. So I really look forward to your answers in the comment box. तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो और इसने आपकी हेल्प की हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो पे लाइक कीजिए and subscribe to our channel, as your support is our motivation. And please comment down below about your suggestions and reviews.